your home, and then you will submit. What is term paper, what is to be done, that will come subsequently. Okay. So now let us start the class now. So the unit one is the biggest one actually. So far still we are continuing with this, and then today it will be over. We have two subunits left in it. One is ex post facto research, and the other is your triangulation. So ex post facto research. Now, if you remember, we have studied about descriptive method of research, which is highly used. Then we have studied about experimental research. Now, what happens? There are situations where you want to make a study where you need to do a descriptive kind of thing, but at the same time, you adopt some kind of, that experiment type also, a mix of that. Then that is also possible. And that methodology is known as ex post facto research. Let us start with this meaning. Export, X, you know already. It has happened, it's X. Gone. Post, what is after that? After something has happened. Ex post. And facto, that is mean what is the current status. So a research which is based on something that has happened and we are doing, then that is called as ex post facto research actually. In some case, they call also in relationship studies as causal comparative research also. So we'll know about this type of research. As regards difficulty of conducting this, it is not difficult because something has happened and you are collecting data and then doing. So it's not difficult that way, but it has its own limitations, and this which we'll be discussing towards the end. So the meaning from technical point of what we call layman point of view we discuss. Now this is the technical. The term ex post facto, it means from a thing done afterwards. So you will not give any kind of treatment, manipulation in this, which is done spot. What you will do research is something that has already happened actually. From that you can do a mixed kind of thing like descriptive experimental type, then that is called as ex post facto research. So it implies some type of subsequent action, which is research. You are investigating. That subsequent action is your research. So, in other words, it refers to the meaning that the situation has already occurred and its effects is to be evaluated in terms of causal relationships, mean cause-effect relations. That way, we find that what is the cause or what is the effect or simply relationships if cause could not be there. So, basically, it is something which has happened. Like you will not be going to collect data with a questionnaire and other thing like that. Even if you have some tools, that has happened. So based on that data, you will be using. So this is the definition by behavioral scientist Kerlinger. Sometimes we call causal comparative research. And it is a systematic empirical inquiry in which the scientist doesn't have control on independent variables because their manifestations have already occurred or because they are inherently not manipulable. Like in experimental research, descriptive research, we manipulate. To the independent variable, we add something, we delete something and see the effect on dependent variable. But here, since thing has happened, it will not add, delete or change anything in independent variable. So there is no manipulation in this case. Just what has happened, based on that, we establish relationship or see the effect, find cause. Like just to repeat this, these are the independent and dependent variables. We have discussed already on in experimental research because it is required here also. So just a recapitulation. Those variables which effects are being examined, and dependent variable, those variables that are being predicted or those that are being affected by independent variable. So let me note down some name and some more have joined.
Okay. So this is dependent and independent variable. Like in this study, you can see the effect of intelligence and socioeconomic status on the academic achievement of pupils. This is a study, say, for example. Then you can easily find out the independent and dependent variable. Now you can see academic achievement is dependent, say, to some extent on intelligence and socioeconomic status, and also some other factors which are not covered. So academic achievement is dependent variable, intelligence and socioeconomic status are independent variable. But here in exposed factor research, we cannot, like intelligence, SES, we manipulate. It is manipulable. You can do something in experimental research, but not in exposed factor research. So if anything has happened and you are doing this kind of variable, then you can do. So like in experimental, you are say descriptive study. The intelligence level will grow for some time. But in exposed factor research, what is at the level so far, those will be considered only. The present socioeconomic status will be considered only. See, socioeconomic status can also be changed. And it has changed. If you see India, independence period and now, there is a lot of been socioeconomic status you can find uplifted. So therefore, the below poverty line has come down. But ex post facto research, what is there available as on the target group, your variables, those only will be considered, not the subsequent. In other words, comparing to experimental or descriptive pure, that research, we do not manipulate. That is the main thing in ex post facto research. We do not manipulate the independent variable. Without that, when we do research, that is ex post facto, because things have happened. So these are specific characteristics of ex post facto research. Like it is sometimes the characteristics of mixed characteristics of descriptive correlational study and experimental research. All this we have discussed earlier. So it is descriptive because the researcher attempts to find the cause, that is causal and functional relationship between variables, and describe his findings as he observes them through the study. And it is a kind of experiment in which the researcher, rather than creating treatment, examines the effect of a naturalistically occurring treatment, what has happened over the period of time. So without any intervention, manipulation. So that way done. So therefore we call it is ex post facto. Like this is the example. Say, for example, this is the research question, for example. Does preschooling contribute to socialization among first grade elementary students? Means जो लोग आंगनवाड़ी, नर्सरी या किंडरगार्टन से पढ़े हुए हैं और जो नहीं पढ़े हुए हैं, उनमें जो सोशलाइजेशन है, जब वो क्लास 1-2 पे जब पढ़ने लगते हैं, क्या कोई अंतर है उनमें, जो पढ़े हुए नहीं पढ़े? वो एक्सपोज पिक्चर रिसर्च हम कर सकते हैं उसका. Like you can see, identify an existing condition or event. Mean first what you have to do, difference find करो कि socialization among first grade students. आपको लगा कि क्लास में 1 में कुछ स्टूडेंट काफी जल्दी मिक्स हो जाते हैं, कुछ नहीं मिक्स हो जाते हैं. उस बेसिस पे आप अलग अलग कर लो बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन. सम क्राइटेरिया कुछ लगा सकते हो उसमें. तो 2 ग्रुप हो गए उसमें. देन गो बैकवर्ड, look backwards to see what may have caused the difference or condition to occur. उसके बाद इंक्वायरी करो दोनों ग्रुप में कि यू कैन आस्क पेरेंट्स, इनके जो नियर पीयर ग्रुप, बहुत सारे चीजें पूछ सकते हो उनको थ्रू. जरूरत पड़े तो यू कैन इंटरव्यू, क्वेश्चन, वो हो सकता है. सो कंसिडर 2 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रेन, दोज अटेंडिंग प्री स्कूल, नॉट अटेंडिंग प्री स्कूल, एंड कंपेयर. तो उनमें से फिर ये कंपेयर कर लो किसने प्री स्कूल से आया है, किसने प्री स्कूल से नहीं आया है. बट ये काइंड ऑफ स्टडी थोड़ा सा वो
रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन में हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली अगर अर्बन सेटिंग में मोस्टली आपको सब लोग ये पढ़ के आए हुए होते हैं उसमें, बिकॉज यू नीड टू ग्रुप्स। फिर दोनों ग्रुप से जब आप कंपेयर करोगे कि कौन अटेंड किया है कौन ने अटेंड किया, और फिर कंपेयर करो तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट आएंगे, देन यू कैन अप्लाई स्टैटिस्टिक्स और क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस की whether preschooling contributes to socialization among the students. So there are two types of design. One correlation design. One is this related to criterion design. So first is correlation design. Basically here we establish some kind of correlation. Like what we do here, inverse collection of two or more sets of data from a group subjects with an attempt to determine subsequent relationship between two sets of data. जो happened, event हो चुके हैं, so there we create two groups related to the variables. If the two variables are correlated significantly, then we say whether there is a relationship or not. So three possibilities can arise here. Like this you can see. The variable measured first caused the second variable, or the variable measured second has caused the first variable, or third or unmeasured variable has caused both the first and second variable. जैसे उस एग्जाम्पल में था एकेडमिक अचीवमेंट में कि which has contributed, like say you can say intelligence has contributed, socio-economics has not contributed, or academic achievement affected intelligence subsequently. So anything you can decide, or you can just simply say that there is a relationship. So this is the correlation design. There is one more design also. That is criterion group design. Criterion means some external parameter when you compare with some external parameter. So this design is applicable where the researcher is interested in knowing what causes a particular state or conditions. Like with example, studying the interaction pattern in effective teaching. You can see this, if this is what the research problem, then we identify two criterion groups. One is say effective teachers or ineffective teachers based on data from students judgment and supervisors rating. तो कोई जब हम ग्रुप करते हैं कोई क्राइटेरिया भी तो होगा ना उसका, सो जो स्टूडेंट्स फीडबैक होती है, सुपरवाइजर्स रेटिंग होती है, या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म भी होता है, तो उस बेसिस पे हमने दो ग्रुप बनाया, इफेक्टिव टीचर्स, नॉन इफेक्टिव टीचर्स से. then really we observe the classroom between two groups to know the interaction pattern. तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, that is the variable is interactive pattern or interaction pattern, means classroom में कौन ज्यादा interactive है through different way, question answer, discussion and other, or it is one way. So then we observe the real classroom behavior, two groups to know interaction pattern, and then discover what may cause certain teachers to be effective. तो अगर वही जो इफेक्टिव टीचर्स ग्रुप ने डिस्प्ले किया कि इंडीड कि दे आर वेरी इंटरेक्टिव, वो उनको पता नहीं होगा, आप उनको थोड़ी बताओगे कि ये इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, दिस व्हाट, जस्ट वी वांट टू सी, नहीं तो फिर वो सेल्फ वो आ जाएगा उसके अंदर. तो देन वी ऑब्जर्व दैट, so if and then note down the points, what makes them interactive, is it question answer, it is proving, going deep, it is something giving some examples, instances, is it something contributing like role play by the teacher, क्या है कि उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों में जो इफेक्टिव टीचर्स ग्रुप. और दूसरा सेम वे ऑब्जर्विंग द नॉन इफेक्टिव ग्रुप, उसमें वो चीजें की कमिंग थी, उसमें ज्यादातर सेल्फ डायरेक्टेड थे टुवर्ड्स
chalkboard or towards your PowerPoint and other. तो अगर दोनों ग्रुप में ऐसे पाया गया है, then you can say that these are the factors contributing to effectiveness. जिसमें कि फिर वो आप जज कर सकते हो कि what contributed, question answers, proving behavior, discussion, examples, instances, what. और अगर नहीं है तो then you can say not. So this way, based on some external criteria, when you do, then that is called as criterion group design. Okay, so now we'll see its limitation of this ex post facto research. First, applicability, where we can use it. Sometimes we can use it when the researcher cannot manipulate the independent variable and establish the controls that are required in experiment. कभी-कभी for policy decisions हम एक लंबे पीरियड तक रिसर्च करने के लिए हमारे पास टाइम होता है, और दूसरा अगर टाइम है भी, डेटा आर अवेलेबल, मीन जो हो चुके हैं, so then go for ex post facto research. So that's the fast applicability. Like example भी दिया हुआ है, in a study of say emotional stability of adults, a researcher cannot manipulate the home background. अगर हम इमोशनल स्टेबिलिटी की एडल्ट्स की स्टडी कर रहे हैं तो उनके होम बैकग्राउंड वो हम चेंज नहीं कर सकते एज ऑन दैट डे. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, इंटेलिजेंस ऑल्सो एज इंटरवेनिंग फैक्टर्स, ये चीजें इट इज लाइकली टू intervene the emotional stability. So thus he studies another group of subjects who are emotionally stable. तो इमोशनली अनस्टेबल, इमोशनली स्टेबल, इन दोनों ग्रुप को हम लेके कंपेयर करें तो स्टडी बन जाएगा उसका. एक फ्रेश डेटा कलेक्ट करने की फ्रेश ग्रुप से जरूरत नहीं. और व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कॉस्टली इन टाइम, मनी और इफेक्ट, वो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इट विल टेक टाइम, इट विल इन्वॉल्व सम एफर्ट्स, मनी also. So whenever the things are available, we can go by it. So such cases ex post facto research. Thirdly, when ethical considerations prevent a researcher from conducting experimental study. This will be applicable in like in life sciences. ह्यूमन एनिमल पे जो स्टडी करते हैं, then there is the ethics of research form. तो उस केस में जब कंस्टेंट आ जाती है, there we can do this ex post facto research based on, because previous जो हो चुके हैं उसमें there is no further ethics in it, जो हो चुके हैं and done, so therefore also possible. So there are situations कभी-कभी where we can use ex post facto method. But there are limitations also. So if anybody is doing, then you have to justify in your thesis that how you have overcome the limitations. So one is a lack of control of intervening variables, because we do not manipulate. Difficult to identify the relevant factors causing particular conditions or phenomenon. I mean basically कि which is cause, which is effect, वो वाला. कभी-कभी सिचुएशन आता है कि आप रिलेशनशिप है बट व्हाट इज कॉज अदर, वो पता नहीं चलता, अनलाइक इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये पॉसिबल है. डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश बिटवीन वेरिएबल्स व्हिच इज द कॉज एंड व्हिच इज इफेक्ट. सेम टाइप है उसके भी आल्सो. इन दैट केस इट वाज फाइंडिंग फैक्टर्स, इट इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स. Then classification of subjects into dichotomous group is a problem. इसका मीनिंग ये है कि जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी में भी इमोशनली स्टेबल पर्सन्स क्विकली थोड़ा मिलेंगे, बट द ग्रुप ऑफ इमोशनली अनस्टेबल हो सकता है कि इट में टेक सम टाइम और आपको लार्ज एक सर्वे करना पड़ेगा एंड देन यू रिक्वायर टाइम फॉर दैट एंड सो ऑन. तो ग्रुप कभी-कभी मिलना डिफिकल्ट होता है. इट डिपेंड्स अपॉन अल्टीमेटली द वेरिएबल्स किसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं. देन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हु आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट्स
एक्सेप्ट फॉर देयर एक्सपोजर टू वेरिएबल। थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अगर हम ग्रुप मिला है इमोशनल स्टेबल, तो वो भी तो रेंज पे डिफर करेंगे, क्योंकि सभी लोग का इमोशनल स्टेबिलिटी लेवल सेम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट द पर्पस इज दैट दे आर नियर इक्वल। 12 बजे, 12 बजे ओवर क्लास, ये पीएचडी स्टूडेंट के। सो द नियर इक्विवेलेंट पॉसिबल है, विल ट्राई, बट कभी कभी अगर लार्ज वेरिएशन है बिटवीन द पोजीशन ऑफ दैट ट्रेट और वेरिएबल इन द सैंपल ग्रुप या फिर जो सब्जेक्ट्स, देन इट में बी ए लिमिटेशन। इट कैन हैपन एनी टाइम, एनी ग्रुप, जब टू ग्रुप्स में किसी में भी हो सकता है, बिकॉज बोथ दिस टू ग्रुप्स आर टू बी नियर इक्विवेलेंट। क्योंकि हम इक्विवेलेंट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो 100% इक्विवेलेंट तो पॉसिबल होता ही नहीं है उस, बट एटलीस्ट near equivalent mean they are comparable, so then it is possible to do this kind of research. Now we'll see some examples of ex post facto research, क्योंकि थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा अनलाइक प्योर डेस्क्रिप्टिव ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, उसमें फास्ट गो में नहीं आता है समझ उसके। You can read further. Let us see these examples, like self perception of culturally disadvantaged secondary school student। सेल्फ परसेप्शन एक टूल मिल जाएगा, टेस्ट होती है उसकी। कल्चरली डिसएडवांटेज सेकेंडरी का कर रहे हैं, तो एक ग्रुप हमें कल्चरली एडवांटेज मिल जाएगा वो, या फिर यू कैन यूज सोशियो कल्चरली डिसएडवांटेज ऑल्सो। जैसे जो थोड़ा रिमोट एरिया है अदर, जो उनको एक्सपोजर नहीं है वो ग्रुप, एंड जो थोड़ा एडवांस है जैसे अर्बन एरिया है अदर, तो टू ग्रुप्स हैं जो उनका सेल्फ परसेप्शन हम स्टडी कर सकते हैं उसमें। लाइक इंटेलेक्ट एंजाइटी एंड इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, ये तो मिल जाएंगे उसमें। जैसे हाई एंजाइटी, लो एंजाइटी टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या और इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, ये यू कैन यूज, उसमें भी टेस्ट हो सकता है इंटेलिजेंस टेस्ट, या फिर इसको अगर हम चेंज करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो फिर वो रेडीमेड एग्जामिनेशन डेटा मिल जाएगा। Attitude of secondary school students in relation to their participation in NSS program, नेशनल सर्विस स्कीम प्रोग्राम, ये भी स्टडी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं, ये रेडीमेड मिल जाएगा। सारे स्टूडेंट्स एनएसएस नहीं लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो जो लिए हैं, जो नहीं लिए हुए, एंड अकॉर्डिंगली उनके एटीट्यूड्स अगर है, तो ये हो सकता है कि जो जो एनएसएस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका कम्युनिटी सर्विस के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव, दूसरे का थोड़ा डाटा कम हो। इट्स लाइकली कैन बी डन इजीली थ्रू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ इफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिव मैनेजर्स, ये भी हो सकता है डिफरेंट ग्रुप्स, क्योंकि ये भी डाटा मिल जाएगा फ्रॉम ए कंपनी अबाउट डिफरेंट मैनेजर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से, इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव। जैसे कोई बैंक का करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे विद ए पर्टिकुलर ग्रुप, एंड देन यू कैन डू दिस स्टडीज अबाउट दिस कॉग्निटिव एंड नॉन-कॉग्निटिव एबिलिटीज। और एज ए से अगर हम बैंक मैनेजर्स की बात करते हैं तो आपको दोनों एबिलिटी चाहिए, कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव। कॉग्निटिव थोड़ा सा जो फास्ट समझे, कैलकुलेशन में गलती ना हो, और नॉन कॉग्निटिव भी चाहिए, कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉग्निटिव भी। तो दैट वे वी स्टडी कैन बी डन। Okay, so we complete this ex post facto research, which is mix of descriptive and experimental. This way, if you see, it is more of little descriptive actually, because based on available data we are doing it. Okay, so we'll move to the last part. Anything you want to ask on this ex post facto? Otherwise move to the other slide.
Let me note down. You. Okay, this is the last subtopic in Unit 1, triangulation. We have discussed about different types of research, also approaches to research, concept of research, and so on. Now, and also ex post facto research. What we have not covered is historical research, actually. That's also kind of research, but actually it is more applicable in, to some extent, in PhD in the students in education than history subject. They are also, but I think no student is from that. So we are not covering that as such. If any student is there, then we add it actually. So nothing to worry about that. Okay. Now, triangulation. This is the last subtopic. Triangulation means actually it is not a method of research. It is a technique actually to establish validity of data. So whenever you hear the word triangulation, it refers to data. So whether we are adopting a quantitative or qualitative study, this is based on data. The data could be numerical, data could be narration or expressive. But data is the vital in research. Now, the generalization findings of research depends upon how the data is true. Because that is how based on data we generalize or find something. If data has some lacunae or some limitation, or if it is not accurate, then it will affect the findings also. So therefore, sometimes, particularly in qualitative research, because that is more subjective, we establish some kind of technique where we can validate the data. Yes, it is true. So that is known as triangulation. Mean we see from different angles. Triangulation, it is actually from the three angles, but not necessary. You can use 2, 3, what, wherever possible. We establish the truthness of that data, accuracy of that data, which is called validity of the data. Some that is true is valid. So the validity of data, establishing validity of data through certain techniques is known as triangulation. We examine the data from different angles. So validity of the data is a major concern in qualitative research. It is used as a method of validating the qualitative data through various means. It doesn't mean that quantitative data you cannot do triangulation. If possible, and you can state that also, no problem. But qualitative data, qualitative research is much more important. It was first used by Campbell and Fiske in 1959. Then it was further substantiated by Dengin, and Dengin talked of about 4 types of triangulation. One is data triangulation, investigator triangulation, theoretical triangulation, and methodological triangulation. So each of these we'll study little. It's not a big one. I think 4 or 5 slides are there. So knowing about that, actually,
And if you have in quantitative study, if you had very good data and other, normally you may not require triangulation also. But in qualitative studies, you need to justify or state about triangulation, how you have validated the data. So first, data triangulation. It is like collection of data from multiple sources. You can collect from interview, collect same data, collect from questionnaire also. So collection of data from multiple sources. Like in a university setup, say for example, we are measuring the academic performance of the student. Even non-academic other performance also, say co-curricular performance, particularly university setup, you can get it from university records. You go to examination level, you get the academic performance. Then as a triangulation, you can use a separate academic test also, which is possible. And if nearly the same students score more, nothing like that, you have a triangulation. So that kind of thing, when we do establish, is your triangulation, collective data from multiple sources. Intent is to obtain diverse views of the same phenomenon in qualitative research. So if you remember this ethnographic, we have that emic perspective, epic perspective, insider's view, outsider's view. That itself is a kind of triangulation to raise the validity of data. So here the purpose is to have the views of different phenomena, then arrive at. Then validate data by seeing if it occurs from different sources. The data from different sources from the occurrence point of view. Say some data you have seen from, say, in Haryana. What about the same thing in Karnataka? Is it similar? If it is similar, yes. Certainly you can say that, yes, same thing. So that way, from different sources, different places, that way you can validate the data, which is data triangulation. Comparing observational data with interview data. It is simple, using two tools for the same data. Then comparing observational data with questionnaire data, that is also possible. And then participants' view recorded in public with data private. That is about public and private institutions, people, officials. These are examples where we can do. Then consistency of participants' opinion about a program over a period of time. That also validates the data. अगर हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कोई एक ग्रुप से आज कलेक्ट किया, उसके बाद एक महीने के बाद फिर पूछा वही चीज, उन्होंने फिर वही चीज जवाब दिया, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है और डेटा की वैलिडिटी भी उसमें, अगर सेम कंटेंट वो बोल रहे हैं तो. So that is also validating the data. So more is towards the data actually in triangulation. But at the same time, we can have investigator triangulation. As a researcher, validating our own stand. So two or more investigators with different research backgrounds examine the same phenomenon. We as a researcher और जो हमारे colleague हैं, किसी को भी बोल सकते हैं कि you also see. Or when you in large scale study, जब आप अकेले नहीं कर पाते हो, कई नंबर ऑफ पीपल आर देयर, हम इन्वेस्टिगेटर्स भेजते हैं, तो अगर सिमिलर ट्रेंड आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वैलिडेट है. अगर हम उत्तर प्रदेश में बीपीएल की कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इट इज वेरी बिग, वहां तो कई इन्वेस्टिगेटर्स जाएंगे डिफरेंट रीजन्स पे. इफ सिमिलर ट्रेंड्स इज कमिंग, वो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टिगेटर्स ट्रायंगुलेशन बढ़ जाएगा, वैलिडेशन. क्लैरिफाइज डिसिप्लिनरी बायस. जो सब्जेक्ट्स अपने पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे हम बिलोंग करते हैं,
उसके रिलेटेड कोई चीज है जो एग्जामिनिंग, उसको हम क्लैरिफाई करते हैं, देन दैट इज also that way we our own stability means, say what it means, suppose एक स्टूडेंट ने कोई सोशल पर्सपेक्टिव या सोशल प्रॉब्लम से स्टडी कर रहे हैं और उस स्टूडेंट ने मास्टर्स और एमफिल भी किया है सोशल, तो डेफिनेटली फील्ड की नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली जो करेगा वो सही करेगा। तो वही बात जस्टिफिकेशन की है, उसमें लिखोगे द रिसर्चर हैज ए क्लियर बैकग्राउंड इन सोशियोलॉजी एंड दिस वन, सो ऑटोमेटिकली वो डाटा को वैलिडेट करेगा रिलेटेड टू डिसिप्लिन, एंड देन एड्स टू द वैलिडिटी ऑफ डाटा। जब हम खुद see whole thing is related to data, so when we say investigator triangulation, it is also contributing to validity of data actually, so that adds to validity of data. Now theoretical triangulation, कोई भी स्टडी करते हैं तो उसके हम थ्योरी से शुरू करते हैं, और पीएचडी में तो लॉट ऑफ दैट वी डू। जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं साथ साथ अपना थ्योरी का भी आ जाता है उसमें, और कई कंटेंट्स है जो हमारे जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे जाते हैं साथ साथ हम ये करते हैं कि कुछ जो कंटेंट्स है हम संभाल के रखते हैं कि ताकि मैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में उसको लिखूं, तो साथ साथ चलता है वो। सिमिलरली अगर आप इंट्रोडक्शन के मटेरियल खोज रहे थीसिस से लिखने के टाइम, तो कई स्टडी आएंगे उसमें, तो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हो जाएगा वो। So theoretical triangulation using all the theoretical interpretations that could conceivably apply to a given area. टेक्स्ट बुक्स और सारे में बहुत सारे थ्योरीज होती हैं, तो अगर सिमिलर वो थ्योरीज आ रहे हैं तो दैट यू कैन से कि ये दिस थ्योरीज टॉक अबाउट दैट, तो वो भी it will raise the validity of the data. Each view is critically examined for acceptability and utility. Each view is from, it could be from experts, it could be from your theory that they have talked. अगर theorist जिन्होंने ये theory develop किया है, you can talk to that expert also उसका, तो possible होता है उसमें ऐसे। जैसे अभी कभी आपने कोई डेटा एनालिसिस मॉडल वो किया हुआ है, तो आपको लगता है कि कोई पे एक एक्सपर्ट है, दिस डे कम्युनिकेशन इज वेरी इजी, वो चाहे यूरोप में, स्वीडन में है या यूएस में है, कहीं पे है, इफ यू सेंड इट उसके पास, तो जवाब देते हैं यार ऐसे। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने अपने पीएचडी के टाइम फुल टाइम रिसर्च जेआरएफ के अंडर यूजीसी फेलोशिप, तो रिलेटेड टू एनालिटिक मॉडल आई हैड सेंड माय एनालिसिस मॉडल टू प्रोफेसर मार्क ब्लैक, उसका नाम है प्रोफेसर मार्क ब्लैक, जिंदा, तो लिविंग है वो, तो वो आई थिंक दैट वाज ही वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, वहाँ पे लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे, तो ही वाज, आई सेंट इट टू देयर, वो भी अच्छा, ही वाज लवलीन हैज आल्सो जॉइंड, सो ऑल प्रेजेंट नाउ, वेट, ओके, सो मार्क ब्लैक रिसीव दैट लेटर, उसका जो है उसमें इंटरनेट भी नहीं था, पोस्ट पे मैंने पोस्ट पे, एंड ही रिसीव्ड इट, बट बाय द टाइम मार्क ब्लैक हैड शिफ्टेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन जो अमेरिका में है, मे बी फॉर शॉर्ट टाइम, और तो थिंक अबाउट दिस प्रोफेशनलिज्म, उन्होंने यूनिवर्सिटी लंदन ने विस्कॉन्सिन को भेज दिया वो, और वहां से मेरे पास जवाब आया। सी द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म उसमें, तो ऑफ अर्लियर डेज, लेकिन आजकल की वहां पे भी यूरोप वो कंट्रीज में भी डाउन हो गया है प्रोफेशनलिज्म, बट देयर इज टाइम लॉट ऑफ उसके जो होता था इसमें। सो एंड आई रिसीव द लेटर फ्रॉम, मैंने तो लंदन पे भेजा था, रिप्लाई आ रहा है अमेरिका से, so and you'll be surprised to know
एट द एंड इन्होंने लिखा था कि सॉरी फॉर हेस्टिली हैंड रिटन लेटर, और मुझे वो एक्सपर्ट है, इन्होंने ये लिखा था, और उसके हाथ का लेटर है वो, और उस लेटर को कॉपी मेरे थीसिस में आज भी मिलेगा, डॉक्टर मार्क ब्लैक का। तो ये चीजें जो है ऑटोमेटिकली आपका थीसिस का वो जो डिफेंस है वो बढ़ा देता है उसमें, ये कंसल्टेशन एंड अदर। सो इट इज पॉसिबल, जब हम अगर एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू लिए तो ऑटोमेटिकली वो जो थियोरेटिकल स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगा उसमें डेटा के रिलेटेड। देन इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाइपोथेसिस। जब हम वो थियोरेटिकली उसको स्ट्रांग करेंगे, इट रेजेस आवर दिस हाइपोथेसिस आल्सो, the statement or logic behind that hypothesis. Okay, move to the next one, that is methodological translation. हाँ, वो जो मैंने बात करता था, जो एक्चुअली ये व्हाट आई गेव द एग्जांपल, वो इसके रिलेटेड ज्यादा सूट है। इट वाज रिलेटेड टू एनालिटिक मॉडल, उसमें जो किया था, तो उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था मुझे उस स्टडी में कि योर सैंपल इज टू स्मॉल, उसके लिए जज करने के लिए, एंड टू रेज द सैंपल, ये सजेस्ट किया था। तब तो इंटरिम हुआ था ना वो। तो द यूज ऑफ 2 और मोर रिसर्च मेथड्स इन ए सिंगल स्टडी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग भी है, एट द डिजाइन लेवल एंड एट डाटा कलेक्शन लेवल। तो और टूल यूज करना रिसर्च डिजाइन पे इट मीन्स कि आप एक डेस्क्रिप्टिव वे पे करो, एक पे वो एक्सपेरिमेंटल वे पे, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कैन बी डन मेथोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। So to summing up, this is most applicable in qualitative research because their data is highly subjective, but can be applied in quantitative study also or quantitative research also. So this is about triangulation. Okay. So we are through this with triangulation, and with triangulation we are through of unit 1. So in unit 1 we have discussed starting from the concept of research to approaches to research, quantitative, qualitative, then this and quantitative, qualitative, and that qualitative particularly related to ethnographic study, then this the subjectivity approach, that one, that some more are there. Actually there's phenomenal study, phenomenological approach, and other. Then descriptive research, different types of descriptive research, cross-cultural, cross-sectional. Then within descriptive, which is qualitative study, the case study, then experimental research, then ex post facto research, then this triangulation and different types of triangulation. So with this we complete the unit 1. Okay. So if you want to ask anything related to this one or anything, we can have 5 minutes interaction, then we can have a break, then we'll start unit 2 today. That is about review of literature, which you are doing, but the theoretical aspects of it will begin today. That also. So anything you want to ask? हेलो। हाँ, yes. सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए कौन सा रिसर्च टाइप हमारे लिए है? कौन सा सुइटेबल होगा? हाँ, कौन सा सूटेबल है सर हमारे हाँ, लिए? हाँ, यस, यस। वो डिपेंड करता है, पहले हम जब एक टॉपिक, ये जब फाइनलाइज करते हैं रिसर्च के टॉपिक, तो पहले एरिया पे आएगा, वो कुछ एरिया, क्योंकि डिफरेंट एरियाज है। जैसे अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एचआर है, फाइनेंस है, किस एरिया में, तो ऐसे एरियाज में, एंड देन वो जो टॉपिक है उससे बताएगा कि वो किस टाइप ऑफ स्टडी से वो हो सकता है। सेम स्टडी कैन बी थ्रू, समटाइम्स कैन बी थ्रू योर डेस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल एंड अदर, दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, ईच ऑफ विल बी हैविंग योर सुपरवाइजर। सो वो आपके सुपरवाइजर एडवाइज करेंगे कि व्हिच मेथड यू शुड गो फॉर, क्योंकि अल्टीमेटली वो साथ रहेंगे आपका 3-4 साल तक, और सो दैट इज ए मस्ट, यू मस्ट कंसल्ट योर सुपरवाइजर, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने साइन करना है ना सुपरवाइजर को,
हम्म आपके थीसिस को, एंड ही विल सर्टिफाई ही और सी। सो हम्म वो एडवाइज करेंगे आपको कौन सी मेथड। बट आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू ऑल दिस, आप खुद भी, हम्म होता क्या है जब भी कंसल्टेशन जाओगे ना टीचर के, अपना सुपरवाइजर को, हम्म गो विथ योर ओन स्टैंड कि सर ये टॉपिक है और ये मैं डेस्क्रिप्टिव मेथड, मुझे जो लगता है ये डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, डेस्क्रिप्टिव मेथड यूज करना, वो करो, फिर वो टेक द दिस वन। ये नहीं कि दैट इज द बेस्ट वे, रादर देन गोइंग सर ये मेरा टॉपिक है मैं कौन सी मेथड यूज करूं, हम्म तो वो ज्यादा वो नहीं है। वो ये मैनेजमेंट में भी ये होता है, मैनेजमेंट जो एक्चुअल मैनेजरियल वर्क, मान लो कि एक बॉस है और एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई आता है सर ये एक प्रॉब्लम है, ये एक तरीका हो गया मैं क्या करूं। दूसरा है सर ये एक प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि मैं इसको हम ऐसे करेंगे तो शायद उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर, आपके बॉस भी खुश होती हैं उसमें। तो कई लोग आप एक्सपीरियंस भी हो, तो सेम ये एप्लीकेबल इसमें भी होगा। हम्म वेन एवर यू गो टू सुपरवाइजर या जब टेलीफोनिकली करो जैसे भी हो, गो विथ योर स्टैंड उसमें कि ये, फिर देन वो करेंगे वो, सो दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। और वो तैयारी करने आप खुद उससे लगेगा कि द रिसर्चर इज प्रिपेयर्ड करते हैं वो, सो दैट विल हेल्प। एनी अदर? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है भाई। Okay, हाँ so I stop sharing this हाँ and we'll be starting today.